नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 21वां प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल ट्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और जो टॉपिक इस प्रैक्टिस टेस्ट में कवर है वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन के लिए भी कॉमन है। तो सीपीसीबी साइंटिस्ट बी और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट दोनों ही पोजीशंस के लिए जो कॉमन टॉपिक्स है वही मैं इसमें कवर करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, please subscribe to my channel, and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. What does bleaching of coral reef refer to? Coral reef की bleaching क्या होती है? A. Corals lose their vibrant colors and turn white. B. The colors are due to colorful microscopic algae called zooxanthellae. C. Due to global warming and warm oceanic water, the algae leaves the corals, thus the corals turn white. D. All of the above. D. All of the above is the correct answer. Basically, all these statements are correct. Coral bleaching is when corals lose their vibrant colors and turn white, and the colors are due to colorful microscopic algae called zooxanthellae. And due to global warming and warm oceanic water, the algae leaves the corals, the surface, and the corals turn white. So D. All of the above. तो coral bleaching जो होती है वो चारों ही स्टेटमेंट उसके बारे में सही है कि कॉरल जो है अपना वाइब्रेंट जो लाल पीला हरा जो चमकता रंग है वो लूज कर देते हैं और सफेद पड़ जाते हैं, वो होता है कोरल ब्लीचिंग। क्योंकि जो कॉरल का जो कलर है वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी की वजह से होता है जो कलरफुल होती है और उस एल्गी को कहते हैं जूजैंथेली। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और पानी के टेम्परेचर को गर्म होने की वजह से एल्गी जो है वो कॉरल का सर्फेस छोड़ देती है और उसकी वजह से एल्गी फिर सफेद दिखनी है। तो सारी डी ऑल ऑफ द सभी कुछ सही है। कोरल ब्लीचिंग इन सभी सेंटेंसेस में कोरल ब्लीचिंग की ही बात की गई, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कीमोहेटेरोट्रॉफ्स? कीमोहेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ए. माइक्रोब्स दैट यूज ऑर्गेनिक मैटर एज कार्बन सोर्स, फॉर एग्जांपल ऑल फंजाई एंड प्रोटोजोआ. बी. दे यूज CO2 फॉर बायोमास एंड ऑक्सीडाइज्ड गैसेस एज एनर्जी सोर्स. CO2 फॉर बायोमास एंड ऑक्सीडाइज्ड गैसेस एज एनर्जी सोर्स वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. Bacteria dependent on photochemical energy and also on organic matter as carbon source. वो भी नहीं. They use light energy to transform CO2 HCO3 to biomass via photosynthesis. तो वो भी नहीं, because anything that uses energy that uses a light energy or photochemical energy to produce biomass will be autotroph and not heterotroph. But chemo means anything that uses organic matter, and heterotrophs is anything that doesn't prepare its own food. So chemoheterotrophs, those are microbes that use organic matter as carbon source, that is they have ready-made organic matter as food, and this includes all fungi and protozoa. तो कीमो का मतलब होता है वो जो केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ हो, और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब वो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो कीमोहेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक मैटर को एज कार्बन सोर्स यूज करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स हैं मतलब वो अपना खाना खुद बना नहीं पाते, तो वो ऑल सारे फंजाई और सारे प्रोटोजोआ कीमोहेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग बायोम्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल? इनमें से कौन सा बायोम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है? सही उत्तर है सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम. वी ऑल नो दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम रेनफॉल एंड दे एक्सपीरियंस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 1952, 1980, 1985, 1950. So forest policy of India was formulated in the year 1952. 1952 में भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, याद रखिएगा डेट. व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट्री ऑन पब्लिक एंड कॉमन प्राइवेट लैंड फॉर फायरवुड, फॉडर, फ्रूट एंड स्मॉल टिम्बर फॉर रूरल पीपल. फॉरेस्ट्री फॉर सोशल गुड, समथिंग सिमिलर टू चिपको मूवमेंट. नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ए, फॉरेस्ट्री on public and common private land for firewood, fodder, fruit, and small timber for rural people. And this happens in villages where a small piece of land, whether belonging to multiple people, which is a private land or a public land, government land, is used to grow trees, and those trees will not only provide firewood, they will also provide food, they will also provide timber, and sometimes they're also used as fodder sources, because when fruit trees are grown along with grasses, etc., then they are used for fodder sources. So this is called social forestry. Forestry for rural people. Okay, and that those social forests are small patches of land. तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है कि छोटा छोटा जो गांव के आसपास जमीन होती है उसमें पेड़ उगा दिए जाते हैं, जिससे फल भी मिलता है, जलावन के लिए लकड़ी भी मिलती है, और
फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी लकड़ी मिल जाती है, और पेड़ों के साथ जो घास वास जो या पत्ते वत्ते उग रहे होते हैं या लताएं उग रही होती है उनको चारे की तरह यूज कर लिया जाता है। तो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर ये काम गाँव के आसपास होता है। इसको सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। ये जंगल जो होते हैं वो छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड में होते हैं, बहुत बड़ा नहीं होता। What is the total number of species of plants, animals, and microbes on Earth? So basically, the question asks how many species of living organisms exist on Earth. So the answer is A, about 10 million, out of which 1.5 million have been identified so far. तो ये सवाल है कि वनस्पति, जानवर और सूक्ष्म जीव मिला के कितने तरह के स्पीशीज टोटल धरती पर होते हैं। तो बेसिकली ये पूछा जाता है कितने तरह के जीव जंतु धरती पर होते हैं। सही उत्तर है ए, 10 मिलियन होते हैं, मतलब कि 1 करोड़, जिसमें से कि 15 लाख अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुके, उनका नाम है, उनका रजिस्टर, और बाकी जो 15 लाख के अलावा जितने स्पीशीज है उनको तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, उनको हम जानते भी नहीं कि उनका नाम क्या है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है? ए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सर्टनली हिस्सा है। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग मतलब कि लैंड यूज को आप ऐसे आपस में कम्युनिटी लैंड यूज हो ताकि सबसे मैक्सिमम हम उपज ले सके। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वन संपदा का संरक्षण, ये भी है। एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल नेशंस, दिस इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है आबादी की रोकथाम, लैंड यूज, जमीन की सही से का इस्तेमाल हो, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो, पर एनर्जी सिक्योरिटी हर देश को हो ये जरूरी नहीं है। ये कंपोनेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नहीं है। उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है पर कंपोनेंट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। उसकी वजह से शायद हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो सब देश एनर्जी सिक्योर हो सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं। तो डी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट आर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स? इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स क्या होते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A group of industries or enterprises that utilize each other's materials and bioproducts such that waste production is minimized. B, multiple industries collaborating with each other in any way. C, plants grown to be consumed by industries. Yeah, D, all of the above. Correct option is A, group of industries or companies or enterprises that utilize each other's materials and bioproducts such that no waste is generated. ठीक है, तो सपोज कोई पेपर पल्प इंडस्ट्री है, उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, उसको दूसरी इंडस्ट्री ने यूज कर लिया। जैसे लकड़ी की इंडस्ट्री है, उसमें से कुछ लकड़ी काटने वक्त जो निकलता है बुरादा, उसको किसी दूसरी इंडस्ट्री ने यूज करके प्लाईवुड बना लिया, तो कोई वेस्ट निकला ही नहीं। तो यही होता है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इज व्हेन वन कंपनी इज सपोज producing timber and they are cutting timber, and that cutting of timber generates waste, and that waste is being used by another plywood industry to make plywood. So in that situation, no waste is generated. The timber is used and the waste is used as in the plywood industry. So this timber industry and the plywood industry will together form an industrial ecosystem. This is just a small example of an industrial ecosystem. Question number 9. The ecosystem surrounding a river gets damaged when a dam is constructed on it. Reason: the area in the upper catchment of the river gets inundated. Choose the correct option. A, both A and R are correct and R explains A. B, both A and R are correct but R doesn't explain A. C, A is true but R is false. R is true but A is false. Clearly A is correct. The ecosystem surrounding a river gets damaged when a dam is constructed on it. And the upper catchment of the river gets inundated. Ye bhi say this is also true. But this doesn't explain A very well. Why? Because the ecosystem surrounding a river gets damaged when a dam is constructed on it, not just because the upper catchment of the river has been inundated, but because the flow of water and the sediment from upper catchment area has been stopped by the dam, and the water flows below the dam really fast, and that causes scraping of soil in the lower catchment area. So that disturbs the ecosystem. Besides, the sediments which were earlier being deposited from upstream are not getting deposited. So that's the correct reason, and not just the catchment is inundated. Okay, so correct option is B. Both A and R are correct, but R doesn't explain A very well. Okay, तो इसमें क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम जो है एक नदी का, वो खराब हो जाता है जब उस पर बांध बन जाता है। कारण बताया गया है कि जब बांध बनता है तो नदी के ऊपर का इलाका डूब जाता है।
तो इकोसिस्टम के खराब होने का नदी का ये कारण सिर्फ नहीं है कि नदी के ऊपर का इलाका डूब जाता है, कारण ये है कि नदी के ऊपर का इलाका जब डूब जाता है तो जब बांध बन जाता है तो ऊपर से जो सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स नीचे को तो आ रहे थे वो बांध की वजह से नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो इतनी तेजी से वो पानी नीचे आता है कि नीचे जो नदी का जो तला है वो खुरच जाता है, और उसकी वजह से वो जो रिवर बेड है वो ठीक से बन नहीं पाता है, तो वहां भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। मछलियों का प्रजनन ठीक से नहीं हो पाता, तो ये भी एक समस्या होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि इकोसिस्टम जो है नदी का खराब हो जाता है जब डैम बनता है, सही है। और डैम के ऊपर का जो एरिया है वो डूब जाता है, ये भी सही है। लेकिन सिर्फ डूब जाना ही इस इकोसिस्टम के खराब होने के कारण नहीं है। तो आंसर होगा बी की ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ लैंडफिल? ए 1.5 मीटर, बी 1.7 मीटर, सी 1.8 मीटर या डी 1.6 मीटर? करेक्ट ऑप्शन इज C 1.8 meter, almost 2 meter. Okay, so remember this figure, almost 2 meter, 1.8 meter. Okay, तो मिनिमम डेप्थ लैंडफिल का कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर, 1.7 मीटर, 1.8 मीटर या 1.6 मीटर? सही उत्तर है सी, 1.8 मीटर। ये याद रखिएगा फिगर, ये ऑलमोस्ट 2 मीटर होता है, तो 1.8 मीटर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है जो हमने आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। In case you have any doubts, let me know in the comments below. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Any problems, let me know in the comments. Keep watching my channel. Bye-bye.